So you have a baryons family, right? In baryons, you have a second part, that is hyperons. Okay. In hyperons, I'll write that particle, their antiparticle, and spin. Excuse me, sir. Yes. सर आज भी ब्राइटनेस काफी ज्यादा हो रहा है, प्रॉपरली दिख नहीं पा रहा। हाँ ठीक है, आप बता देना, ठीक है, चेंज इट। Is this fine now? Is this fine? यस सर। Yes. So a particle, their antiparticle, then spin. First of all, in hyperons, you have a lambda 0, right? The antiparticle of lambda 0 is basically lambda 0 bar, and spin is half. And then you have sigma plus. What is the antiparticle of sigma plus? Can anyone tell me? What is the antiparticle of sigma plus? Sigma minus. Sigma minus. Any more answer? Sigma minus Sigma minus. bar. Sigma minus. Bar. Sigma minus bar. Exactly. Sigma plus का antiparticle sigma minus नहीं है, but it will be sigma minus bar. Similarly, sigma 0 you have. Antiparticle of sigma 0 is sigma 0 bar. And the spin for both particle, that spin is half. And then you have sigma minus, antiparticle of sigma minus is sigma plus bar. And of course, that spin is half. Now tell me why the antiparticle of sigma plus is not sigma minus. Sigma minus क्यों नहीं है? And same is true here also. The sigma minus, the antiparticle of sigma minus is not exactly sigma plus, rather it is sigma plus bar. There is some other particle. So as you discussed, that particle and antiparticle should have same mass, right? But we see that mass of sigma plus and sigma minus, they are actually different. The sigma minus particle is actually heavier than sigma plus. So antiparticle of sigma plus can never be sigma minus, but some other particle is there. And same is true here also. The antiparticle of sigma minus is not exactly sigma plus, but some other particle, because the mass, there is a mass difference of sigma plus and sigma minus. And last particle you have omega minus. Okay, what is the antiparticle of omega minus? That will be Omega plus bar. exactly. The spin of this particle, क्या spin है? The spin of 3/2. exactly 3/2. ठीक है. So these are actually hyperons, and hyperons is basically not stable, as you have discussed that from all baryon family only that proton is stable. Why not other particle is not stable? Baryon में सिर्फ proton क्यों stable है, बाकी कोई particle क्यों stable नहीं है? Whatever you have seen here, all particles and antiparticles, they are not actually stable. Except in baryon family, you have only proton stable. Even neutron has some finite lifetime, and rest of them, of course, they are not stable. क्यों ऐसा है? Why they are not stable? Because if you see among all baryon family, only proton is having least mass. Others क्या है? सारे जो particle है, they are actually heavier as compared to proton. ठीक है ना? So they actually will decay. They will undergo decay because they are not stable, and the final product will have proton. है ना? तो ये सारे particle क्या है? They are actually heavier. अगर baryon family में देखोगे, proton का सबसे least mass है, and other is actually heavier. So they will undergo decay, and decay का जो product होगा, उनमें आपका एक proton होगा ही होगा. ठीक है?
sir, I want to ask something. Yes. Sir, why we use bar? I mean, what does bar represent for? बार मीन्स जैसे आपका सपोज मान लो सिग्मा माइनस बार, बार का मतलब क्या है, एंटी पार्टिकल है ना। जब आपका सिग्मा माइनस बार का एंटी मतलब सिग्मा प्लस हो जाएगा, ऐसा कुछ मतलब क्या है, सिग्मा माइनस बार एक का पार्टिकल है। व्हाटएवर if I to answer give that answer, let me clarify that properties of antiparticle and particle. तो सिग्मा प्लस एक पार्टिकल है और उसका एंटी पार्टिकल है सिग्मा माइनस, देयर आर टू पार्टिकल्स, है ना। ये आपका एक सिग्मा माइनस पार्टिकल, सिग्मा माइनस जो है दैट इज द एंटी पार्टिकल ऑफ सिग्मा प्लस. How you have chosen this? Because you know that relation between quantum number for particle and antiparticle. The few of the quantum number same is for particle and antiparticle, and that is satisfying these two particles. And other जो है that is reverse. जैसे आपका suppose मान लो charge है, charge you can see the charge. The charge is different. Also charge different, then lepton number different, baryon number, whatever number quantum number is there, I mean जब का antiparticle का different होता है, they are perfectly satisfying. ठीक है ना। तो कैसे हम बाहर लिख रहे हैं, कुछ नहीं है, पार्टिकल और एंटीपार्टिकल का जो रिलेशन है, they are perfectly satisfying this two sigma plus and its antiparticle. Thank you, sir. Yes. आपने एक अभी लॉजिक जो बताया था कि मास जिसका कम होगा वो ज्यादा स्टेबल है, नहीं, ऐसा वो इसका मतलब किसने होता बोला है वो ज्यादा स्टेबल है? वो सबसे वो लिस्ट वो कम स्टेबल है, जिसका मास कम है वो ज्यादा स्टेबल है. जैसे if I talk about from lepton family also, we have discussed this, right? You have a electron minus and it's anti-neutrino. Mu minus is is associated neutrino. Tau minus is associated neutrino. Here the tau particle is not stable. ठीक है ना। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, दिस इज द सेकंड जनरेशन, दिस इज द थर्ड जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन का मास सबसे कम है, सेकेंड जनरेशन का मास इंटरमीडिएट है, थर्ड जनरेशन का मास सबसे ज्यादा है. इनका जो मास है, दैट मास ऑफ दिस पार्टिकल इज अराउंड 726 MeV per c square. ठीक है ना। आप लोगों ने देखा है कि जो लेप्टन पार्टिकल का जो मास होता है किस रेंज पर होती है, दैट इज फ्रॉम 0 to 135 MeV per c square. इस पार्टिकल का फ्रॉम लेप्टन फैमिली, इनका जो मास है दैट इज एक्सेप्शनल, इसका मास उस रेंज पे लाई नहीं करता है, एंड दिस पार्टिकल इज नॉट स्टेबल आल्सो. तो यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेनेवर यू हैव a heavy particle that will not be stable. Okay. Yes, sir. And you have exactly same thing you have noticed for I mean in nuclear physics also. जब आपका समझ मान लो न्यूक्लियस बड़ा है, that is actually not stable, they will undergo either fission or radioactivity and they will come to ground state, है ना। तो जब भी कोई पार्टिकल हैवी है, that will not be stable. Sir, mass is not matching with leptons family, no sir. Exactly, this is exceptional. You have to keep in mind, or you have to write also that this is the exceptional case. Among all lepton family, all is having mass in the range of 0 to 135 MeV per MeV per c square, except tau minus is very heavy and this is not stable also. ठीक है। तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में हम लोग कैसे लिखते हैं, जब जो प्रॉपर्टीज है, नेसेसरी प्रॉपर्टीज जो है सेम होता है, कुछ प्रॉपर्टीज फॉर पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, दे आर सेटिस्फाइंग few quantum number that is opposite for particle and antiparticle, they are satisfying. So in that way we are choosing that what is the particle and what is the antiparticle. ठीक है। Okay, apart from this there are few heavy baryons exist. If you if I tell you that number, I think you can remember. There are few heavy baryon also exist. I didn't write it in that table because I mean that I cannot summarize that table, it will be very big. So there are few heavy baryon that you have to keep in mind, because in some exam they may ask that quantum number of heavy baryon also. So you have a heavy baryons. So you have a particle and spin, that is the necessary thing here. इसका एंटी पार्टिकल के बारे में डिस्कस नहीं करते बेसिकली. So
So you have a few particle, for example, you have a delta plus, the very heavy baryon. The spin of this particle is 3/2. Then you have a delta plus, spin is again 3/2. Then delta 0, spin is 3/2. And then you have a delta minus, the spin is 3/2. Okay, and of course there are few more. You have a sigma star plus, spin is 3/2. Sigma star 0, spin is 3/2. And sigma star minus, spin is 3/2. Okay, so here you can distinguish, right? Here I am writing star. What is the meaning of star? है ना, ये particle आप पहले भी देखे हो. State. They are actually heavier as compared to that I mean that sigma plus or sigma 0 and sigma minus, whatever you have seen in hyperon. Yes. So antiparticles is also there. Actually, for this particle, antiparticle is not used to mention in that book. Maybe problem with discovery. Okay, that's what I mentioned. Okay, sir. ये बुक में बेसिकली इसका एंटीपार्टिकल के बारे में डिस्कस नहीं करते. ठीक है, so what is the meaning of sigma plus and star? What is the difference between star and original that sigma plus? Excited state. Star. Found in excited state, so they will be heavier as compared to sigma plus or sigma 0 or sigma minus. So that's why we are using that symbol star here, and their spin is also different. So Yes. so एक बार वो स्टार वाला पार्ट प्लीज रिपीट कर दीजिए ना. हाँ, जैसे आपने देखा हो ना, हाइपेरॉन्स फैमिली में मैंने लिखा था सिग्मा प्लस, सिग्मा 0, सिग्मा माइनस. Here also I have written sigma plus star और sigma 0 star, sigma minus star. तो वहाँ वो जो पार्टिकल आपने देखो, और ये जो स्टार का मतलब क्या है यहाँ पे? What is the meaning of star? Star meaning they are actually in the excited state. So they are basically heavier as compared to that particle. You have a sigma plus, sigma 0 and sigma minus. Okay, and their spin is also 3/2 here. Okay, there are few more particles exist. Suppose you have a cascade 0 star, cascade star 0, cascade star 0 and cascade star minus, omega star minus, and all is having spin 3/2. Okay, same is true here, that star mean they are actually in excited state, so they are basically heavier as compared to that original particle what you have seen in hyperons family. Okay, and there you have to keep in mind that इनका जो spin होते हैं they are basically 3/2, है ना. ये जो cascade है इसका spin कितना है? 3/2, but original जो आपका cascade 0 या cascade minus, their spin is basically half. So this is about particle and antiparticle of all subatomic particle. Now it is very interested to discuss about that quantum number in particle physics. Quantum number in particle physics. So first of all, I'll discuss about the charge. I'll discuss about the charge noted by Q. So what is the charge? How will define the charge? How will define charge? So charge is the physical properties of matter. Because of charge, a particle will experience force when it is placed in EM field. Okay, so you can write the charge is the properties of matter because of which it will experience force when it will place in electromagnetic field. The property of matter because of which it will experience force when it is placed in some electromagnetic field.
And charge is for subatomic particle. For subatomic particle, charge is quantized. For subatomic particle, charge is quantized. For subatomic particle, charge is quantized. It means that charge of a subatomic particle can be only found, that is Ne. That charge cannot be some fractional number in subatomic case. That N can take values like 0, it can take values plus minus 1, it can take values plus minus 2. ठीक है ना? 0 किसके लिए है? Can you give me example that charge is 0 for which particle in subatomic particle? Can anyone give me an example of? Neutron. Neutron, exactly. Can you tell me the charge is plus 2e? Charge is plus 2e. किसका है? Alpha. Alpha is your, I mean, nucleus, right? It is not a particle. In particle physics, alpha I'll not tell. Just you have written, right? You have a delta double plus. The subatomic particle, this is a subatomic particle, and the charge of this subatomic particle is how much? That is 2e. Right? Sir, -2 is also. Can you give an example? आप बताओ माइनस 2e है. अभी जो हम लोगों ने लिखे थे इतना सारे पार्टिकल है और एंटी पार्टिकल लिखे हैं, कोई है -2e? So -2 तो नहीं है. No, sir. -2 नहीं है, so you can use +2 only. Okay, sir. ठीक है, thank you for this point. Okay, now charge is quantized first of all. Now how will check the charge conservation in particle physics? Suppose you have a interaction like A is interacting with B and producing some C and D subatomic particles, and suppose charge of A is QA. So कैसे charge conserve देखोगे? So first of all, it is important to mention here, for any interaction or any decay process in particle physics, charge should be conserved. चार्ज आपको कंजर्व होना ही पड़ेगा. कोई भी डीके अलाउड, कोई भी डीके या इंटरेक्शन अलाउड होने के लिए चार्ज को कंजर्व होना ही पड़ेगा. अगर चार्ज कंजर्व नहीं है कोई डीके या इंटरेक्शन में, इट मींस दैट डीके विल नॉट बी अलाउड. ठीक है, बट चार्ज कंजर्वेशन कैसे चेक करोगे? चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. कैसे चेक करोगे? सपोज आपका ये रिएक्टेंट है, A is interacting with B, so this is the reactant and this is the product. So how will check the charge conservation? Suppose for A particle charge is QA and for B charge is QB. So total charge of the reactant, that will be QA plus QB, and that must be equal to Q of C plus Q of D. Charge is additive in nature. Additive का मतलब क्या है? जो भी reactant में जो भी particle है, you have to add that charge. Product में जो भी particle है, you have to add that charge. And that should be balanced. On the left hand side, whatever charge you are getting resultant, that should be balanced with product. It is necessary condition for any allowed decay. Whatever decay it is, charge should be conserved. The charge is not conserved, that decay or interaction will never be allowed. Second is lepton quantum number. Second is lepton quantum number, basically denoted by L. So lepton quantum number, I mean, you have a many number of subatomic particle. Now to distinguish, है ना, lepton particle को पहचानने के लिए एक नंबर को असाइन किया गया है ना, समझ रहे हो? So to distinguish that lepton particle from all other subatomic particles, there's a one quantum number assigned, that is called lepton quantum number. So lepton particle का पहचान क्या है? That is your lepton quantum number. So and this quantum number is plus one for all lepton particles. It should be plus one for all lepton particles. You can write that L should be plus one for, it should be plus one for
electron, then its associated neutrino, then you have a mu minus its associated neutrino, tau minus its associated neutrino. And this lepton quantum number is minus on for their antiparticle. Their antiparticle means you have a plus, then nu u bar, then mu plus, then nu mu bar, then tau plus, and then nu tau bar. The plus on for this particle and minus on for this particle. Okay, so lepton number है ना, ये lepton particle का पहचान है. It should be plus on for all lepton particle and for their antiparticle it should be minus on. अब देखो lepton family में तीन तरह की particle है. This is called electron family. This is called muon family and it's called tau family. अब तीनों को अलग से डिफरेंस करने के लिए separate quantum number is provided. That is Le, that is plus on for E minus and nu E. And this is Le is minus on for E plus and nu E bar. Okay. Then you have a L mu. L mu is plus on for mu minus and nu mu. It is minus on for mu plus and nu mu bar. Okay. And then you have a L tau, tau lepton quantum number. That is plus on for tau minus and nu tau. It is minus on for tau plus and nu tau bar. ठीक है ना? Again, that lepton quantum number is additive in nature. It is additive in nature. You can mention again that lepton quantum number is additive in nature. Lepton quantum number is additive in nature, and L, Le, L mu, L tau, that should separately be conserved for any allowed interaction. ठीक है ना? कोई भी allowed interaction या decay process है, total lepton number L, electron lepton number Le, L mu, L tau, that should be separately conserved. Separately conserved होना पड़ेगा आपका. ठीक है ना? L को भी कंजर्व होना पड़ेगा, Le को भी कंजर्व होना पड़ेगा, L mu को भी कंजर्व होना पड़ेगा, L tau को भी कंजर्व होना पड़ेगा. अगर कोई भी एक आपका कंजर्व नहीं है, then that decay or interaction will not be allowed. And can you please mute your mic? Can you please? Can you please mute your mic? Okay. So it should be conserved. Okay. ये पॉइंट दोबारा बता दो. हाँ, ये बता रहा हूँ कि total lepton quantum number L, that L, Le, L mu and L tau, that should be conserved for any allowed interaction or decay. ये आपको separately conserved होना पड़ेगा. L, Le, L mu, L tau, that should separately be conserved in any allowed interaction or decay process. इनमें से कोई भी एक conserved नहीं है. It means that decay will not be allowed. हो सकता है कोई decay में आपका total lepton number conserved है, but L tau is not conserved, then that decay will not be allowed. हो सकता है तीनों quantum number conserved है, एक conserved नहीं है, that decay or interaction will not be allowed. And how will check? Just you have to take addition of total lepton number of reactant, addition of total lepton quantum number of product. Now if you take example, suppose you have a case like this. You have a case like mu minus is interacting with positron and it's producing K plus and K minus. ठीक है? Now if you see that total lepton number, इसका कितना है total lepton number? Plus on. This will be minus on, right? On the right hand side, they are not lepton family, belong to lepton family, so it will be 0.
तो प्रोडक्ट का जो नेट इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है, 0 है। रिएक्टेंट का नेट कितना है, 0 है। ठीक है, स्टिल दैट डीके इज नॉट अलाउड। व्हाई? बिकॉज इफ यू चेक दैट म्यू lepton quantum number, muon lepton quantum number for mu particle it is class on, but for positron it is 0. On the right hand side you have a 0. So you can see on the right hand side net L is L mu is 0, but on the left hand side that is on. It's not conserved, it's not balancing, right? Left hand side में जितना है on is not balancing with product, that is 0. It means although that total lepton number is conserved here, no problem with total lepton number conservation, but L mu is not conserved. Similarly Le will not be conserved, है ना? तो इनमें से कोई भी एक कंजर्व नहीं है, इसका मतलब क्या है, दैट डीके विल नॉट बी अलाउड। इट मींस ये डीके आपका अलाउड नहीं है। ठीक है ना, सिंपली एक कंजर्व नहीं है, यहीं से बता सकते हो कि ये डीके अलाउड नहीं है, क्योंकि एल एलई एल म्यू एल टाउ इनमें से कोई भी एक कप का कंजर्व नहीं है। इट मींस दैट डीके इज नॉट अलाउड, डीके और इंटरेक्शन। ठीक है ना, बाकी चेक करने का जरूरत ही नहीं है। सर, देखो यहाँ इसको एक बार फिर से समझा दीजिए, समझ में नहीं आई है। ये वाला समझ में नहीं आई? जी हाँ, पूरा स्टार्टिंग से ही है मतलब। हाँ मैं कह रहा हूँ कि आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर का कितना ये है, 4 है। एक आपका टोटल एल एलई एल म्यू एल टाउ, सो दे शुड बी सेपरेटली कंजर्व। तो पहले क्या चेक किया मैंने, टोटल इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर इसका कितना है, प्लस ऑन है, पॉजिट्रॉन का माइनस है, माइनस ऑन। सो वी सम देम दैट इज 0। ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव ए k प्लस, इसके लिए l 0 है, k माइनस के लिए भी 0। इफ यू सम देम दैट इज 0। सो यू कैन सी दैट l is conserved for this interaction, but ये आपका नेसेसरी नहीं है कि l कंजर्व होगा मतलब वो डीके आपका अलाउड है। आपको बाकी सारे इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर को भी देखना पड़ेगा। सो आई नेक्स्ट आई हैव चेक्ड दैट एल म्यू पार्टिकल के लिए कितना है, प्लस ऑन है, पॉजिट्रॉन के लिए कितना है, 0 है, प्रोडक्ट का कोई है नहीं। तो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में कितना है, नेट एल म्यू ऑफ प्रोडक्ट इज 0। हाउएवर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड you have a on plus 0, that is on. So it means that L mu is not conserved. So when L mu is not conserved, you can blindly say that decay is not allowed. क्यों? क्योंकि L mu L tau है ना, Le सारे को कंजर्व होना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इस डीके में देखो चार्ज कंजर्व्ड है, इस डीके में चार्ज कंजर्व्ड है, इस इंटरेक्शन में चार्ज कंजर्व्ड है। Still that interaction is not allowed because L mu is not conserved here. आप समझ में आई? यस सर, यस सर। Next is your baryon quantum number. Baryon quantum number noted by B. Again, baryon quantum number is plus on for all baryon particles, है ना? जितना सारे baryon particles देखे हो आप, सारे के लिए baryon नंबर ऑन है, प्लस ऑन है। इट इज माइनस ऑन फॉर किसके लिए है, फॉर देयर एंटी पार्टिकल, for their antiparticle, and it is of course 0 for all other particle, for all other particle. So other particle means what? Other particle means you have a lepton, you have a meson, तो उनके लिए क्या होगा baryon number, that will be 0. But जितना सारे baryons है सारे के लिए क्या है, प्लस ऑन है, it is minus on for their antiparticle and it is 0 for all other means lepton and meson. ठीक है? Again, that baryon should be conserved in any allowed interaction or decay process. It should be conserved in any allowed interaction or decay process. Okay. It should be allowed in any interaction or decay process.
and baryon is additive in nature. It should be additive in nature. Now, if you check that baryon quantum number, suppose you have a decay process is given like this. Can take example. Suppose you have a pi minus plus p is producing lambda 0 plus k0. Can you check whether baryon number is conserved here or not? So you can see pi minus का कितना है? Pi minus is meson particle, right? So for obviously baryon number will be 0. Proton is baryon, तो इसके लिए baryon number कितना होगा? Plus. Lambda 0, it is baryon particle, इसके लिए +1 है. K0 is meson. So इनके लिए देखो, हाँ. So इनके लिए देखो जो reactant का net baryon number that is on, product का net baryon number that is on. So it is matching, right? Reactant का on है, product का भी on है. It means baryon number is conserved for this decay. No problem with baryon conservation. Similarly, you can check. Suppose you have a beta decay process. Neutron is going to proton. You have an electron minus and associated anti-neutrino. You can check there also. Conserved. It should be conserved, right? Proton is on, it is 0 and 0. Okay, so इनका net कितना है? On है. So baryon number is conserved. No problem with baryon conservation. Next, you have a quantum number that is strangeness quantum number. ठीक है ना? तो कोई भी डिके या इंटरेक्शन हो वहां पे आपका बैरियन नंबर को कंजर्व होना ही पड़ेगा. तो पता चल गया ना आपको, चार्ज कंजर्व होना ही पड़ेगा, लेप्टन नंबर कंजर्व होना ही पड़ेगा, बैरियन नंबर कंजर्व होना ही पड़ेगा, है ना? तो इनमें से जो डिस्कशन हुआ है इनमें से कोई भी कंजर्व नहीं है, मतलब वो डिके और इंटरेक्शन अलाउड नहीं है. नेक्स्ट इज योर स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर. Strangeness quantum number basically denoted by S. Strangeness quantum number denoted by S. So what is the meaning of strangeness quantum number? Why it is called strange quantum number? Can anyone tell me why it is called strangeness quantum number? You know that terminal is यहाँ से पता चल रहा है ना कि few particle have some few subatomic particle have some strange behavior. What kind of strange behavior is there? They are produced by strong interaction, है ना? They are produced by strong interaction, but they will decay by weak interaction. So those particles are produced by strong interaction, but they decay by weak interaction. For such particle, on quantum number is assigned, that is called strangeness quantum number because of their strange behavior. Strange behavior क्या है यहाँ पे? They are producing by strong interaction, but they are decaying by weak interaction. That is a strange behavior. Okay, so you can write that also. That many subatomic particle are produced by strong interaction. Many subatomic particle are produced by strong interaction. But they decay by weak interaction. For such particle, on quantum number is assigned
one quantum number is assigned, that is called strangeness quantum number. For such particle, one quantum number is assigned, that is called strangeness quantum number. Okay, na? So many subatomic particles are produced by strong interaction but decay by weak interaction. For such particle, one quantum number is assigned, that is called strangeness quantum number. Now, कौन सा strange quantum particle है? Suppose you have a K plus, K0. They basically produce by strong interaction but decay by weak interaction. For such particle, that strange quantum number is given by +1. Okay, and you have a another particle. Suppose you have a lambda 0, sigma plus, sigma 0, sigma minus. For them, the strange quantum number is -1. For them, the strange quantum number is -1. Okay, and you have other particles. Suppose you have a cascade 0, and cascade minus. For them, the S quantum number is -2. And you have another particle. This is also strange particle. That that is your omega minus, and for this it is -3. So these particles are called strange particle because they basically produce by strong interaction. That's why they basically produce by strong interaction, but they will decay by weak interaction. That's why they are called strange particle. And for them, that strange quantum number is non-zero. Excuse me, sir. Yes. सर आपने ये कैस्केड का स्ट्रेंज क्वांटम नंबर क्या लिखा था 2, तो वो क्लियर नहीं है, काफी ब्लर है। ये वाला तो नीचे कैस्केड का। अच्छा, कास्केड का, हाँ, -2 है। Okay, so that is not visible. It's very blurred. Okay, okay. Then 1 minute. 1 minute, huh? Now is it fine? Or still is problem is there? So still it's not visible properly. It's not visible, right? आप बताओ। Same problem, sir. Same problem, right? अभी भी same problem. लिखा तो हल्का नहीं है। नहीं नहीं, लिखा हल्का नहीं, बिल्कुल परफेक्टली फाइन। सर वो एक पार्ट बोर्ड का ना बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता, मतलब वो ब्लर होता जा रहा है। कौन सा पार्ट है वो? सर राइट हैंड साइड, मतलब आपने s इक्वल्स टू 1 + 1 के बाद आपने क्या लिखा है वो नहीं दिख रहा। अच्छा नीचे उसके अच्छा अच्छा, ये अभी शुरू हुआ है, राइट? नो सर, ये हो रहा है फिर वापस नॉर्मल हो रहा है, लेकिन अभी काफी समय से ऐसे ही है। हाँ, सर एक बार कैमरे को साफ कर लीजिए। कैमरा साफ है, बिल्कुल साफ है, कैमरे का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो तो बता देना, ठीक है? कॉन्ट्रास्ट सर एक बार लिख के दिखाइए। एक मिनट। सर ये ब्लूइश ग्रीन वाली जो सेटिंग है ना, इसमें थोड़ा ठीक दिखता है। इसमें ठीक दिख रहा है सर इसमें नहीं सर, जो आपने की थी ना सेटिंग चेंज। अभी बताओ। अब ठीक दिख रहा है? नहीं? Yes, sir.
Now you can see, no? So that is Okay, no, tomorrow I'll check that problem. Actually, in few days that problem is happening. I don't know. Tomorrow I'll rectify it. Okay. आज थोड़ा मैनेज कर लीजिए, कल ठीक हो जाएगा. सर एक डाउट है, हाँ जी बोलो. एंटी पार्टिकल का स्ट्रेंजनेस में क्या रिलेशन है? एंटी पार्टिकल का स्ट्रेंजनेस जो होगा दैट विल बी ऑपोजिट हो जाएगा. ठीक है ना. जैसे सारे पार्टिकल का क्या लिखो आप, जो वैल्यू लिखे हो फॉर देयर एंटी पार्टिकल इट विल बी ऑपोजिट. जैसे सपोज मैं इसका बात करूं, के माइनस का क्या हो जाएगा, दैट विल बी -1. ठीक है ना. सपोज यू हैव ए फॉर दिस एंटी पार्टिकल इज ओमेगा प्लस बार, राइट. फॉर दिस पार्ट फॉर दिस एंटी पार्टिकल इट विल बी +3. सो एंटी पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, बेसिकली ऑपोजिट हो जाएगा. ठीक है. Now there is another. एंटी पार्टिकल्स के लिए अपोजिट मींस प्लस की जगह माइनस, राइट? हाँ, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ. सपोज मान लीजिए के प्लस, इसके लिए स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर कितना है, +1 है. +1 इसका एंटी पार्टिकल क्या है, के के माइनस. माइनस. इसका एस कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा. ओके सर. सर. हाँ बोलो. सर ये चीज तो क्लियर है कि जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होते हैं लेकिन बाद में वीक इंटरेक्शन से होते हैं, ये बिहेवियर जो है. मैं एग्जांपल देता हूँ. सपोज मान लो पाई माइनस प्लस पी, they are interacting and producing lambda 0 and k0. If you see that interaction, this interaction is called strong interaction. I'll prove that later. That will be strong interaction. You can see यहाँ पे produce क्या हो रहा है, this is a production. In production you have a k0, right? And I'll prove this interaction is strong interaction. ना, ये strong interaction क्या है, strong interaction. So I can say that in strong interaction this is producing, k0 is producing. But if you see that decay process of k0, when it is decaying, it is like pi plus and pi minus. Okay, I'll discuss this in detail. है ना. ये इंटरेक्शन या डीके प्रोसेस देखोगे, ये प्रोसेस एक्चुअली वीक प्रोसेस है ना. तो इस प्रोसेस में देख के पता चल रहा है कि इस पार्टिकल का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में हो रहा है. बट इसका जो डीके हो रहा है दैट इज वीक इंटरेक्शन. तो एक काइंड ऑफ स्ट्रेंज बिहेवियर है ना, कि प्रोडक्शन हो रहा है स्ट्रॉन्ग में और डीके हो रहा है वीक में. सर दैट इज ओके, दैट स्ट्रेंज पार्टिकल्स को फिर देन स्ट्रेंजनेस का नंबर दे दिया. पर सर ये 2 और 3 मतलब कुछ पार्टिकल्स को ये किस बिहेवियर की वजह से 2 और 3 दे दिया. you are saying that how that S quantum number is different for different particles. That you are saying, right? Oh, that depends upon their quark content, है ना. composition क्या है उन जैसे आपका कैस्केड 0 या कैस्केड माइनस जो भी है, उनका क्वार्क कंटेंट देखोगे दैट इज डिफरेंट फ्रॉम योर k0 और k प्लस, है ना. तो ये जो है आपका जो क्वांटम नंबर आ रहा है डिफरेंट एस क्वांटम नंबर, बिकॉज ऑफ देयर कॉम्पोजिशन, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ बेसिकली व्हाट, दे आर मेड अप ऑफ बेसिकली क्वार्क, है ना. तो उनका जो क्वांटम नंबर असाइन होगी कहाँ से होगी, दैट विल बी फ्रॉम क्वार्क कंटेंट. तो उनका क्वार्क कंटेंट डिफरेंट है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग डिफरेंट एस वैल्यू. I'll discuss in detail, no need to be worried, but point should be noted. That point is very good. Why this is different for different particle? Answer is because of their different quark content or composition. Okay. But if someone asks you, can you prove, can you show that how that particle is producing by strong interaction, by decaying by weak interaction for strange particle? This is one example. That this particle is producing, this interaction is strong interaction. I'll prove that in this interaction that k0 is producing. But when it is decaying, this is decay is weak interaction. That also I'll prove. No? So for such strange behavior, that quantum number is assigned. Okay, na? Next is your isospin. Next is your isospin, basically denoted by I. Before discussing this, let me clear that isospin and spin, they are basically different. Isospin के साथ spin का कोई correlation नहीं है. They are completely different. What is isospin? You can write the definition. This is also important. ठीक है ना. तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैं डिटेल्स में बता दे रहा हूँ आपको कि क्यों स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर का असाइन हुआ है, क्यों इलेक्ट्रॉन नंबर का असाइन हुआ है, क्यों बैरियर नंबर का असाइन हुआ है. क्योंकि आई कैन टीच दिस थिंग इन 2 क्लासेस, बट दिस थिंग फ्रॉम हेयर दिस क्वांटम नंबर इज कमिंग, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ओके ना, कि कहाँ से
और Q आ रहा है quantum number. So next is your isospin. There is no relation between isospin and spin. Now what is isospin quantum number? Why it is needed? You can write that. So hadrons having nearly same mass, hadrons having nearly same mass, not exactly same mass, maybe same mass or nearly same mass. Hadrons having nearly same mass, same spin and same strangeness, quantum number. Hadrons having nearly same mass, same spin and same strangeness quantum number are grouped together and assigned a quantum number, that is isospin quantum number. Hadrons having nearly same mass, same spin and same strangeness quantum number are grouped together and assigned a quantum number, that is isospin quantum number. For example, suppose you have if you take that example, you have a K plus and K0. Okay, they have nearly same mass. And their spin also same. Spin कितना है इनका? इसका spin कितना है? K plus and K0 का? They are meson, right? Zero. Zero. They are same spin. They are same mass also. They have same mass, same spin, and strangeness is also same. इसका strangeness कितना है दोनों का? For both particles, strangeness is on. So for them, that isospin is defined. How it is defined? So they are basically in this family you have two particles. They are grouping together and assign that isospin. How it is assigned? So you have 2i plus on, that is equals to m. M means number of particle in the group. So in that group you can see two particle is there, so m will be 2. So it means 2i equals to on, it means I equals to half. It means I equals to half. Similarly, you have a pi plus. You have a pi plus, then pi 0 and pi minus. They have same mass and also spin is same. They have same mass, spin is same. What is the strangeness of this particle? Strangeness is 0. What is the strangeness of this particle? Strangeness is 0. So they have same, all these three quantity are same, they are grouping together. And how this quantum number is given? 2i plus on equals to m. M is how much? You have three particles are there, so m should be 3. It means 2i equals to 3 minus 1, that is 2, which implies I equals to 1. ठीक है ना? तो कैसे इस क्वांटम नंबर को गिवन है? तीन प्रॉपर्टीज को देख के, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल there should be nearly same mass, then same spin and then same strangeness quantum number, है ना? तो इन तीनों प्रॉपर्टीज जिन पार्टिकल का सेम है, they are grouping together and that quantum number is assigned. Now if I give another examples, हाँ जी बोलो. पाई प्लस का एंटी पार्टिकल पाई माइनस होता है ना? पाई प्लस का एंटी पार्टिकल पाई माइनस होता है ना? पाई माइनस होता है. नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी क्या इन दोनों, आप ये बताओ. डिफरेंट होगा. नहीं, मैं कह रहा हूँ एक्चुअली योर वॉइस इज नॉट क्लियर टू मी. कैन यू वॉइस कट गया है आपका. हाँ हेलो सर, अभी सुनाई दे रहा है मेरे साइड पे? बोलो. हाँ सर, आपने क्या बोला था पहले? मुझे वहां से कट हो गया था वॉइस. हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हो कि दिस इज एंटी पार्टिकल ऑफ पाई प्लस, राइट? यस. व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस? क्या ये हेड्रॉन्स नहीं है?
नहीं सर, मेरा इशू इसमें ये था पाई प्लस पाई माइनस और पाई जीरो, इसका हमने एक ग्रुप कर दिया आइसोस्पिन का। हाँ, लेकिन पाई प्लस और पाई माइनस अगर दोनों एंटी पार्टिकल हो है तो उनका स्ट्रेननेस नंबर डिफरेंट होगा ना। दोनों का स्ट्रेननेस तो 0 है ना, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है। हाँ, ओके ओके, सॉरी सॉरी, क्लियर। अब you have a second, you have a प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। अब देखो मैंने एक पॉइंट लिखवाया था आपको, नियरली सेम मास। इनका मास नॉट एग्जैक्टली सेम, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, बट देयर मास इज नियरली सेम, है ना। देयर मास इज नॉट दैट मच डिफरेंट, है ना, उसीलिए मैंने वो पॉइंट लिखवाया था कि नियरली सेम मास। सो दे हैव नियरली सेम मास, है ना, नॉट एग्जैक्टली सेम बट नियरली सेम मास। स्पिन इज सेम, द स्ट्रेननेस इज आल्सो सेम, so they are grouping together, they are grouping together. So here m will be 2, it means for them I will be half. Similarly you have a sigma plus, sigma 0 and sigma minus. They have not exactly same mass but they have nearly same mass, they have nearly same mass, spin is same and straightness is also same. So they are grouping together and assign quantum number 2i plus on equals to m is 3 here and I will be how much, that will be on. बट ये बताओ मैं यहाँ पे जैसे आपका सिग्मा प्लस बार नहीं ले रहा हूँ या सिग्मा माइनस बार नहीं ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा हूँ? कि उनके मासेस डिफरेंट है। मास इज डिफरेंट बट मास मास तो सेम नहीं होना चाहिए ना, सेम मतलब ये सेम हो या नेसेसरी नहीं है, नियरली सेम होना चाहिए। इसका सिग्मा प्लस एंड सिग्मा माइनस का भी मास सेम नहीं है, बट देयर मास इज नॉट दैट मच, देयर मास डिफरेंस इज नॉट दैट मच अप्रिशिएबल, है ना, उतना मास डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे मैंने Strangeness. देखो, हाँ जी, Strangeness भी Due sir, to strangeness, you are not taking. exactly there, I mean if you take sigma plus bar, for that particle it will be some different strangeness quantum number, strangeness quantum number सेम होना पड़ेगा, स्पिन सेम होना पड़ेगा एंड मास को नियरली सेम होना चाहिए, ठीक है। इन दैट वे वी आर ग्रुपिंग, ठीक है। एंड देन यू हैव नेक्स्ट इज थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट of isospin, and that is I3, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। नाउ देखो एक ग्रुप है जैसे आपका आइसोस्पिन है, आइसोस्पिन में इफ आई टेक एग्जांपल, सपोज यू हैव ए पाई प्लस, पाई 0 and pi minus, they have same isospin, right, that is I equals to 1, they have same isospin, that is I equals to 1, right। बट देखो इनका तीनों का एक ही क्वांटिटी है, so how you will differentiate them, their charge difference is different, I mean their charge state is different, for this it is plus 1, it is 0, it is minus 1, ठीक ना। So the particles having same isospin but different charge state, so to distinguish their different to distinguish their charge state, third component of isospin arise, or the concept of third component of isospin came, है ना, third component of isospin came, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि the particles or the hadrons having same isospin but charge different, charge state is different, so to distinguish their charge state, third component of isospin came. Now what is the range of isospin, that can be either from plus I to minus I, जैसे आपका when I is on, so I3 can be on, it can be on 0 or minus on, and plus on is assigned for highest charge, 0 is assigned for pi 0 and minus on is assigned for pi minus, ठीक है ना। Hadrons having same isospin but charge state is different, to distinguish their charge state, third component of isospin came, and it can take values from plus I to minus I, and depending upon that charge state, that number is given. So for
+1 means goes to pi 0, 0 means goes to intermediate, that is pi 0, minus means goes to pi minus, and so on. ठीक है ना? अच्छा, एक दो पॉइंट मैंने लिखवाना भूल गया था, यू शुड नो, आप लोगों ने बोला भी नहीं। जैसे जब मैं स्ट्रेननेस की बात कहा है ना, तो स्ट्रेननेस क्या होना चाहिए कोई रिएक्शन में? स्ट्रेननेस क्या होना चाहिए? कंजर्व होना हाँ, वहां पे लिख लो। आप लोगों ने भी नोटिस नहीं किया, आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट पॉइंट। स्ट्रेननेस शुड बी कंजर्व्ड इन स्ट्रॉन्ग एंड ईएम इंटरेक्शन, है ना? ये स्ट्रेननेस क्वांटम नंबर की जगह पे लिखना पड़ेगा आपको, है ना? स्ट्रेननेस क्वांटम नंबर शुड बी कंजर्व्ड इन स्ट्रॉन्ग एंड ईएम इंटरेक्शन. It should be conserved in strong and EM interaction. However, in weak interaction, okay, so straightness should be conserved in strong and EM interaction. However, in weak interaction, it may be or may not be conserved. The straightness, sir, isospin, sir. No, I forgot to mention straightness में है ना, क्योंकि straightness में मैंने लिखाना भूल गया था ना. I forgot to mention that point, and it is important. However, in weak interaction, It may be or may not be conserved. ठीक है ना? In weak, सर हाँ जी बोलो. सर बाकी सारे जो लैप्टॉप नंबर, बैरियो नंबर कंजर्वेशन की है, that is conserved for all the interaction. हाँ, that should be conserved for all interaction. अगर नहीं है तो फिर अलाउड ही नहीं है. बस स्ट्रेननेस को भी कंजर्व होना पड़ेगा फॉर स्ट्रॉन्ग एंड ईएम इंटरेक्शन. वीक के लिए मे बी और मे नॉट बी कंजर्व. बट अगर कंजर्व नहीं है, जैसे वीक की बात कर रहा हूँ, सो डेल्टा एस इज 0 फॉर स्ट्रॉन्ग एंड ईएम, एंड वीक के लिए मे बी और मे नॉट बी. सो मे बी मतलब क्या है? 0. मे नॉट बी मतलब क्या है? इट शुड वायलेट. इट शुड वायलेट. अगर वायलेट है तो कितना वायलेशन अलाउड है? वायलेशन शुड बी विद इन प्लस माइनस ऑन. मैक्सिमम चेंज जो है दैट शुड बी प्लस माइनस ऑन, एंड दैट इज योर वीक. ये वाला पॉइंट समझ में आया? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बताओ. ये वाला पॉइंट समझ में आया? जैसे आप डेल्टा एस लिखते हो, लेट मी क्लियर यू, यह वे ए प्लस बी इज गोइंग टू सी एंड डी. ठीक है, आप डेल्टा एस को कैसे डिफाइन करोगे आप? दैट विल बी योर स्ट्रेननेस क्वांटम नंबर ऑफ सी पार्टिकल प्लस डी पार्टिकल माइनस ए पार्टिकल माइनस बी पार्टिकल. आई मीन सम ऑफ द स्ट्रेननेस क्वांटम नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेड. तो ये अगर कोई इंटरेक्शन वीक में हो रहा है, सो दिस शुड बी this can be 0 or it can be plus minus on. अगर सपोज मान लो प्लस माइनस 2 है, it means it will not be allowed in weak also. It means it will not be allowed in weak. तो कोई इंटरेक्शन या डीके प्रोसेस हो रहा है, तो अगर वो वीक में हो रहा है, so it may be conserved. अगर कंजर्व नहीं है, then maximum change कितना है? That should maximum change allowed, that should be within plus minus on. इससे ज्यादा है, then that interaction or decay will not be allowed in weak interaction. ठीक है ना? तो मे नॉट बी का मतलब यही है कि कंजर्व नहीं होगा, बट कंजर्व नहीं होगा विद इन दिस रेस्ट्रिक्शन. इसके ऊपर नहीं है. +2 -2 +3 -3 वो अलाउड नहीं है वीक के लिए. कितना अलाउड है? अप टू प्लस माइनस ऑन. sir, if it is 0, then it is strong or weak. No, yeah, that point is good, but that I cannot say that is strong or weak, because other quantum number is there to decide whether it is strong or weak. जैसे Okay, strong के लिए, let me clear, for strong interaction all lepton quantum number should be conserved, but weak के लिए नहीं, necessary नहीं है. weak के लिए delta s may be 0, but कुछ quantum number है that is not conserved, है ना? So I can tell you that no need to be worried, but कैसे decide करोगे? By looking all that conservation laws, है ना? एक particular conservation laws को देख के you cannot identify. ठीक है? सर आइसोस्पिन भी कंजर्व होएगा? हाँ, अब बताओ. आइसोस्पिन का भी मैं बताना भूल गया. आइसोस्पिन का क्या कॉन्सेप्ट होगा? बताओ. क्या आइसोस्पिन कंजर्व होगा? Isospin will be conserved in strong interaction only, but it will not be conserved in
weak and EM interaction. ठीक है ना? Isospin will be conserved in strong interaction. Okay, I'm extremely sorry that I forgot to mention that important point. That isospin should be conserved in strong interaction. However, it will not be conserved in EM and weak interaction. Hello. Yes. Sir, if we check a reaction by the isospin quantum number, if it is conserved or not, we would check the third component or only the isospin. No, you have to check. You have to check isospin. Third component of isospin or the isospin? Let me come one by one. First of all, I forgot to mention strangeness. I have I told you, right? You have to check how you have to check and how it distinguish. For strong, it will be conserved. A strong and EM, it will be conserved. For weak, maybe or may not be conserved. Then next point, that is your isospin. You have to check isospin also. ठीक है ना? तो isospin strong के लिए conserved होगा, EM and weak के लिए conserved नहीं होगा. Then you have a third component of isospin. Third component of isospin will be conserved for strong and EM, but it will not be conserved in weak. पहले I के लिए लिख लो, है ना? Isospin के लिए. Then you will write for I3. Excuse me, sir. हाँ जी बोलो. So you said that isospin should be conserved for strong, but it may or may not be conserved for weak and EM. Na? May or may not नहीं. It will not be conserved in EM and weak interaction. Okay. It will be only conserved in strong interaction. However, it will not be conserved in EM and weak interaction. है ना? ये conserved नहीं होंगे. है ना? Now है ना? आप लोगों के पास स्पेस है तो फिर इसमें चेक कर लो. मैं चेक करो isospin है ना? Whether it is conserved or not. So how we will check? You have a pi minus plus p goes to lambda 0 and k 0. ठीक है? आपको पता है isospin इसका कितना है? हर एक का पाई माइनस का isospin कितना है? 1. Then half. इसका कितना है? 0. इसका कितना है? के प्लस का कितना है? के प्लस का कितना है? अभी तो क्या हमने क्या यहाँ पे कंजर्व है? Is isospin conserved here? No, sir. No, sir. It is conserved because isospin अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था that is simple summation, but isospin जो होती है that is your vector sum. Isospin and spin conservation जब देखोगे कोई इंटरेक्शन में then you have to take vector sum. तो जैसे आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ऑन एंड हाफ का वेक्टर सम. राइट हैंड साइड में क्या है? 0 एंड हाफ का वेक्टर सम. अब जरा बताओ इसका रिजल्टेंट क्या क्या हो सकता है वेक्टर सम का? 3/2 and 1/2. Exactly 3/2 and 1/2. राइट हैंड साइड में क्या हो सकता है? 1/2. Exactly 1/2. Now you can see this is matching with this. अगर प्रोडक्ट का एक भी isospin is matching with any one of the isospin of reactant, then it means isospin is conserved. It means delta I is 0. So you have a half that is matching with this half. It means isospin is conserved for this interaction. Delta I will be 0. So in which of the cases we have to see the vector sum, isospin and Spin. spin? Okay, sir. ठीक है. There are few property that you have to look at product also. Suppose you have a parity or charge conjugation, है ना? तो जब हम parity या charge conjugation चेक करते हैं कोई interaction का, तो हम उसका reactant का जितना particle है उनका product लेते हैं, सारे का parity का product. ठीक है ना? Product में जितना particle है सारे का parity का product लेके चेक करते हैं. That will come. सर हाँ. प्रॉब्लम जो की है उसमें जो राइट हैंड साइड थी रिएक्टेंट साइड उसमें 0 प्रोडक्ट साइड सॉरी तो उसमें 0 एंड 1/2 था तो उसका 1/2 एंड -1/2 पॉसिबिलिटीज है. ऐसा है जब भी दो वेक्टर है सपोज मान लो a प्लस b इनका वेक्टर सम लोगे तो ये कहां से कहां तक लाई करेगी इनका वैल्यू मॉड ऑफ a प्लस b टू मॉड ऑफ a माइनस b. ये इनका वेक्टर सम होती है. इसी को बोलते हैं हम वेक्टर सम. तो जैसे आपका सपोज मान लो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? ऑन एंड हाफ था. तो इसका वेक्टर सम करोगे ऑन प्लस हाफ मॉड ऑफ ऑन प्लस हाफ टू ऑन माइनस हाफ. सो दैट विल प्रोवाइड यू 3/2 एंड 1/2 है ना?
ठीक है ना। 0 एंड हाफ का करोगे तो 0 प्लस हाफ 2 0 माइनस हाफ, है ना। मॉड करोगे तो एक ही वैल्यू आएगा ना। 0 माइनस हाफ मतलब ये माइनस हाफ का मॉड दैट इज हाफ। ठीक है, इज दिस क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? यस Yes. ओके। सर, तो चीज वो थर्ड कंपोनेंट में दोबारा बता दो कि कंजर्व फॉर हाँ हाँ स्ट्रॉन्ग। हाँ, यू राइट इट एक्चुअली दैट टाइम आई वाज जस्ट डिस्कसिंग, है ना। मैं एक एक करके बता रहा हूँ। आइसोस्पिन तक हो गया ना, अब थर्ड कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। सो थर्ड कंपोनेंट should be conserved in strong and EM interaction. It should be conserved in strong and EM interaction. Please write it. It should be conserved in strong and EM interaction. It should be conserved in strong and EM interaction, but it is not conserved in weak interaction. It will not be it will not be conserved in strong weak interaction, है ना। So आपका strong and EM में conserved होगी, but weak में conserved नहीं होगी। Suppose you have an example. If I take example, है ना। अब जरा बताओ, इसी को लेते फिर पाई माइनस प्लस टी गोज टू लैम्डा 0 प्लस के 0। जरा बताओ इसमें I3 कंजर्व्ड है या नहीं। जरा बताओ I3 कंजर्व्ड है या नहीं यहाँ पे। सो इफ यू सी, पाई माइनस के लिए कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। पाई प्लस का I3 कितना हो जाएगा। सो इफ यू रिमेम्बर, वी हैव ए ग्रुप प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनके लिए I कितना था, हाफ था, राइट। I3 विल बी plus half to minus half, and plus half will goes to highest charge, that is proton, and minus half will go to neutron. तो इनका क्या होगा, I3 हाफ हो जाएगा। लैम्डा 0 का कितना है, 0. लैम्डा 0 का 0, वेरी गुड। K0 का कितना है, Half है. K0 का हाफ है। सो हैव ए K प्लस एंड K0 you have combined, right? आपको याद है, minus half. it will be minus half. By the way, why I have not taken K minus इस ग्रुप में, again because of strangeness number problem. इस ग्रुप में आपको याद है ना, K प्लस एंड K0 को लिया था मैंने, बट K माइनस को नहीं लिया था, राइट। व्हाई, बिकॉज K माइनस का जो स्ट्रेंजनेस है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस टू पार्टिकल। सो यू कैन सी यहाँ पे भी आपका I3 क्या है, कंजर्व्ड है, राइट। यू कैन सी दैट आइसोस्पिन इज कंजर्व्ड है, ठीक है ना। अथवा सॉरी, I3 इज कंजर्व्ड। सो I3 इज कंजर्व्ड, इट मींस, हाँ। सर Sir, इसका सम जो वेक्टर सम नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैंने आपको बताया ना, स्पिन लॉजिक है. हाँ जी बोलो, बताओ, कुछ पूछ रहे थे। सर, मैं ये पूछ रही थी K प्लस और K0 में हाफ और माइनस हाफ ऐसे दो वैल्यूज आएंगे ना, तो इसके पीछे कुछ ऐसा लॉजिक है क्या, K प्लस को माइनस हाफ देना है या फिर? हाँ तो ये तो देखो ना, आपका जैसे आपका I जो है दैट विल बी फ्रॉम प्लस I3 टू माइनस I3, ठीक है ना। तो आपका इनका I कितना डिफाइंड है, दैट इज योर ऑन, सो I3 विल बी प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। सो जो ज्यादा वैल्यू है दैट विल गोज टू ज्यादा चार्ज, है ना। जैसे आपका यहाँ पे क्या किया मैंने, सॉरी, I3 विल बी प्लस I2 माइनस I, राइट, प्लस I2 माइनस I, ठीक है ना। तो जिसका I3 ज्यादा है, I3 ज्यादा मतलब दैट विल गो टू, जैसे I3 यहाँ पे प्लस हाफ है, प्लस हाफ मतलब ज्यादा नंबर है ना, I3 इज लार्ज है, तो ज्यादा जो है दैट विल बी गोज टू, है ना। ये डिपेंड करेगा, इसका वैल्यू ज्यादा मतलब ज्यादा ठीक है चार्ज सर, को दोगे, ठीक है. माइनस मतलब इसको दोगे, है ना। ठीक है। So these are the quantum number. Now there is one formula that is called Gell-Mann-Nishijima formula. सर, हाँ बोलो। तो I3 का वेक्टर एडिशन है या नहीं? I3 का वेक्टर एडिशन नहीं है, सिर्फ स्पिन एंड आइसोस्पिन का वेक्टर एडिशन है, बाकी किसी का वेक्टर एडिशन नहीं है, ठीक है। स्पिन जब चेक करेंगे हम,
Sir, isospin is conserved for. Isospin. Oh Isospin. yeah, strong and. Okay, sir. Isospin. Isospin will be conserved only for strong, but EM and weak के लिए conserved नहीं है. I3 will be conserved for strong and EM interaction, but it will not be conserved in weak interaction. Now there is one formula called. बोलो. सर आपने कहा कि जो आइसोस्पिन है उसमें वेक्टर एडिशन होगा ना बस. आइसोस्पिन एंड स्पिन, जब हम स्पिन की चेक करेंगे ना, आइसोस्पिन एंड स्पिन, ठीक है, दोनों का हम वेक्टर एडिशन देखेंगे. And next you have Gell-Mann. Next you have Gell-Mann-Nishijima formula. Gell-Mann-Nishijima formula. Okay. In that formula, the charge of a subatomic particle in Gell-Mann-Nishijima formula, the charge of a subatomic particle can be written as its third component of isospin plus baryon number plus strangeness divided by 2. फिर कोई भी आपका subatomic particle है, कोई भी subatomic particle है, तो उनका चार्ज जो है that is related with its third component of isospin, baryon number and strangeness. ठीक है ना? तो ठीक है ना, यू कैन चेक. सपोज आपका कोई एक सबएटॉमिक पार्टिकल है ना, और आपको 3 क्वांटम नंबर के बारे में पता है. सो यू कैन फाइंड आउट द अदर क्वांटम नंबर लाइक स्ट्रेंजनेस. फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव, सपोज यू हैव a proton, you know charge of proton is +1. I3 is how much? I3 कितना है? half. Baryon number 1. You can find its strangeness. You can find its strangeness. You can find. Can you calculate? So you can just use this formula. 1 equals to half plus baryon number is 1 S by 2. From here you can write. कितना आ जाएगा? 1 plus S equals to 1. So S will be 0. ठीक है ना? And that you know. So एग्जाम में किस वे में क्वेश्चन दे सकता है कि आपका बोलेगा सपोज देयर इज ए recent discovery of a subatomic particle having charge this much, I3 this much, S this much. So what is the baryon number of this particle? ठीक है ना? So you can this formula is valid for all subatomic particle. If you know 3 quantum number from this list, you can find the left of the quantum number. ठीक है. तो एग्जाम में इसका यूज कैसे है? कोई आपका अननोन क्वांटिटी आपको अननोन पार्टिकल दे देगा, बोलेगा सपोज देयर इज अ रिसेंट डिस्कवरी ऑफ दिस पार्टिकल हैविंग चार्ज दिस मच, I3 दिस मच, S दिस मच, व्हाट इज द baryon नंबर ऑफ दिस पार्टिकल. Now there is one term called helicity. One term called helicity, basically denoted by H. What is helicity? Can anyone tell me what is helicity? Helicity is defined as projection of spin along the direction of, projection of spin along the direction of flight. It means S dot P, and there's a mod of S and mod of P. So defined as projection of spin along the direction of linear momentum, और इसको क्या बोलते हैं? direction of flight भी बोलते हैं. Okay. Projection of what? Projection of spin along the direction of its linear momentum. It is defined as projection of spin of a particle along its direction of linear momentum. Along the direction of linear momentum. और इसको ये भी बोलते हैं direction of flight भी बोलते हैं. Direction of flight. सर के इसकी विजुअलाइजेशन जैसे कोई फिजिकली कैसे सर?
हाँ अभी बताता हूँ एवरीथिंग आई विल टेल यू, डोंट नो। ठीक है, so suppose you have a, if I take example, suppose you have a spinning of particle is like this, and suppose the linear momentum of this particle is in this direction. अब बताओ इनके लिए एज का वैल्यू क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आई एम टेकिंग टू डिफरेंट सिचुएशन। So suppose the spinning of the particle is in this way, and the direction of the particle, direction of momentum or direction of the flight of this particle is along this direction. So can you tell me what will be the angle between S and T here? कितना है? Pi. It will be pi, right? Just you have to use right hand rule. So when that particle is moving in this direction or it is in clockwise direction, if you use right hand rule, then this thumb will give the direction of spin, है ना? तो इनका direction of spin देखोगे, that will be along this direction, है ना? So if the particle is spinning along this direction and if the direction of momentum is along this direction, so actually the spin direction will be in this direction. How will calculate? Just you have to use right hand rule. So if you use right hand rule, है ना? Suppose मान लो इस तरह की मोशन हो रहा है और direction of flight जो है that is out of the board. Suppose मान लो out of the board है. Now if you use that right hand rule, so the direction of spin will be what? That will be into the board. That will be into the board. तो यहाँ पे angle between these two is how much? कितना आ जाएगा? 180 degree. 180 degree. So 180 means that ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, you'll get -1 आ जाएगा। देखो सर हाँ, ये डायरेक्शन ऑफ स्पिन 180 एंगुलर मोमेंटम आपको पता है ना, एंगुलर मोमेंटम कोई भी पार्टिकल का और जब ऑर्बिटल मोशन होता है कैसे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देखते हो आप? राइट हैंड रूल, that is coming inside the board ना, हाँ जी, that is coming. Sir, if we will right hand rule के according sir, हाँ हाँ इसका spin का inside the board आ रहा है ना? S, Yes. Yes, sir. हाँ S is into the board, S is into the board है ना, and the linear momentum is given that is out of the board है ना. तो in case में क्या होगा, angle between these two is actually 180, so this will become SP cosine 180. SP means modulus of S and modulus of P, that will be cancelled with this denominator. So cos 180 is nothing but -1. And इस तरह की नेचर जो पार्टिकल्स को करते हैं उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल. फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल कौन है? Your neutrino exist in nature, they are basically left-handed neutrino. All the neutrino that is exist in nature, they are basically showing left-handed helicity. और इसको बोल बेसिकली लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल तो नहीं, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी बोलते हैं, है ना. अब इस सिचुएशन को देखो, है ना, कि स्पिनिंग इस तरह की हो रहा है क्लॉकवाइज, बट जो डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम है दैट इज इनटू द बोर्ड. अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन दैट स्पिन डायरेक्शन इज इनटू द बोर्ड, राइट. So they are basically parallel. They are basically parallel means angle will be 0 degree. So S dot P that will become SP cosine 0. So that is +1. ठीक है ना, इस केस में क्या आ जाएगा +1. और इसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड हेलिसिटी बोलते हैं, राइट हैंडेड हेलिसिटी. सर हाँ बोलो. इस बार का डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से ले रहे हैं ना? हमेशा राइट हैंड रूल से लोगे. मैं कह रहा हूँ जब आपका लीनियर मोमेंट, ये आपका सपोज मान लो कोई पार्टिकल का, सुनो यहाँ से, कोई पार्टिकल का मोशन इस तरह की हो रहा है और इसका अगर लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन पे है, ठीक है ना, तो उसके लिए हेलिसिटी -1 होगा. क्यों? क्योंकि मोशन इस तरह की है, ऑब्वियसली स्पिन किधर होगा, इनटू द बोर्ड होगा, तो फिर उसके लिए -1 होगा. ये कौन पार्टिकल शो करता है? यू हैव ए न्यूट्रिनो, दे शोज दिस काइंड ऑफ बिहेवियर. बट व्हेन यू हैव ए एंटी न्यूट्रिनो, स्पिन का तो डायरेक्शन इज आपका क्लॉकवाइज ही है, बट लीनियर मोमेंटम जो है दैट इज
इनटू द बोर्ड है, ठीक है ना। तो नाउ दैट स्पिन विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और कौन शो करता है ये नेचर आपका एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है ना। कौन इस तरह के नेचर शो करते हैं, दैट इज योर एंटी न्यूट्रिनो, एंड फॉर एंटी न्यूट्रिनो दैट विल बी प्लस ऑन, इट विल बी कॉल्ड राइट हैंडेड हेलिसिटी. So it means in neutrino, the direction of P and S is always pi, is हाँ, opposite to each other. exactly. It means that. Exactly. Oh, okay, sir. So neutrino and anti-neutrino, they have same spin direction. You can see they have same spin direction, but for neutrino that linear momentum is out of the board, for anti-neutrino it is into the board. It's an experimental fact. It is observed like that. ठीक है ना? They have same spin, but the direction of flight is actually different. So all the neutrino exist in nature, they are basically left-handed. However, that anti-neutrino, they are basically right-handed helicity. ठीक है? Now जो आपका helicity है, what is the time? I think I should stop here. It's already 8:40. Is it like helicity is there something like helical path like thing? No. Helicity is not helical like kind of thing. Okay. देखो हेलिकल में क्या होता है? हेलिकल में क्या होता है बताओ? Rotating and going forward. हाँ, rotating and going forward. यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपका स्पिनिंग हो रहा है, राइट? And spin is kind of also rotation, right? You can think like that, but there should be some difference in helicity and that helical path. But the terminology is saying like that, right? Helicity and helical path. I'll check and I'll let you know. ठीक है ना? Sir, in both cases, spinning is same clockwise direction only, sir. In both cases, right? Actually, I think there is a typos, bit typos. Please correct it. You point good. Actually, जो आपका न्यूट्रिनो है, इसका जो स्पिनिंग डायरेक्शन होती है, दैट इज योर क्लॉकवाइज. दिस इज योर न्यूट्रिनो केस. और एंटी न्यूट्रिनो का जो स्पिनिंग डायरेक्शन होती है, दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन पे होती है. दोनों का हाँ, पॉइंट इज वेरी वेरी गुड. एक्चुअली आई शुड थैंक्स टू यू दैट यू मेड करेक्शन. दैट स्पिनिंग डायरेक्शन इज डिफरेंट एक्चुअली. So then इसकी P भी तो फिर लेनी पड़ेगी ना? Let me clear. आगे का लॉजिक भी चेंज हो. Let me clear. Extremely sorry. There's a typos and she pointed out. Good point actually. The spin is not same. There is spin is opposite. Now see, जो आपका इसका direction of flight होती है, that is actually out of the board. आगे का कौन सा लॉजिक आपको आप बता रहे हो? सर हेलिसिटी का फॉर्मूला लेके हमने जो लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड अभी बता निकाला था ना. नहीं एक्चुअली क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, दैट डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट इज सेम. दैट डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट इज सेम, बट स्पिन डायरेक्शन for neutrino the spin direction is clockwise, and for anti-neutrino it is anti-clockwise. For anti-neutrino it is anti-clockwise. Now spin इसके लिए किस तरह की हो जाएगा आपका? When you will see that spin of inside, it will be inside, right? the board. It will be inside the board. So this side you have a P, this side you have a S. So here you will have a helicity -1, and for this it will be out of the board. So you have a P and you have a S, they are parallel. So here you will have helicity +1. Thank you and very good. Inside. Sir. हाँ जी बोलो. Sir, angle. हाँ जी. This is perfectly fine. यहाँ जो है ना, वो हमारा एंगल है ना सर. अगर वो लाइन ऑफ फ्लाइट आप बोल रहे हो बाहर जा रहा है और एस बार अंदर जा रहा है, तो एंगल 90 डिग्री होगा ना. एंगल मतलब डायग्राम में 180 समझ में आ रहा है. स्पिन नहीं स्पिन देखो आपका स्पिन का डायरेक्शन किधर है एक्चुअली. ये तो आपका जब कोई पार्टिकल का ऑर्बिटल मोशन है, आपको कैसे आप एंगुलर मोमेंटम को निकालते हो, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, राइट. दिस साइड आपका
ऑर्बिटल मोशन हो रहा है, so that thumb will tell you the direction of angular momentum, spin also, spin angular momentum. So right hand का जो thumb है that will decide the direction of spin, है ना. जैसे यहाँ पे आप ये नहीं कहोगे कि भाई स्पिन आपका इधर हो रहा है, इसका मतलब आपका स्पिनिंग का डायरेक्शन इस साइड है, ये नहीं है. हाउ विल डिसाइड? जस्ट यू हैव टू यूज दैट राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल यूज करोगे, जो थंब है दैट विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ स्पिन. ठीक है सर एक्चुअली ना मुझे भी ये हो रहा था ये डायग्राम देख के. ये हाँ. आउट का बोर्ड है ना देखो ये. देखो मैं एग्जांपल देता हूँ. जैसे पार्टिकल का ये वाला समझ में आ रहा है आपको, कि जब पार्टिकल का स्पिनिंग इस डायरेक्शन में हो रहा है, जो बाकी फिंगर जो है कर्ल बनाया आपने, तो अगर स्पिनिंग, इफ दैट कर्ल ऑफ other finger is representing the spinning of a particle, then spin direction is actually what? Is the spin direction, and same is true for angular momentum also. ऐसे हम देखते हैं. अब इसमें भी काफी बार यूज किए हो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, है ना. दिस सर ये द बोर्ड, P perpendicular to the board है ना, ये out of the board, perpendicular to the board. P is perpendicular to the board. Yes. So P is perpendicular to the board. इस तरह से देखोगे आप, इस तरह से जो पार्टिकल का समझ मान लो इस तरह की मोशन हो रहा है, स्पिन हाउ विल डिसाइड स्पिन, इस तरह से. समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? Perpendicular to the board. हाँ एग्जैक्टली. P is perpendicular to P the is board. Now it is perpendicular to the board. P is perpendicular to the board, है ना. And that S will how will define? जो बाकी फिंगर है उसको रोटेट करवाओ like spin. So this will define the direction of spin. Here also how will define? आपको इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा because spin is like that, so that you see that your thumb is going into the board. in that direction. Okay, in that way you have to define. But I'm very thanks to that student who mentioned that point. Extremely very good actually. I forgot that point. Very good. Okay, I'll stop here. Okay, tomorrow I'll discuss them. Thank you, sir. Okay, sir.